नमस्ते। वेलकम टू गेटवे इंग्लिश। आज हम कुछ नए शब्द सीखेंगे जो शब्द घर में होता है। So, wall, wall. This is a wall. Door, door. That is a door. Curtain, curtain. That is a curtain, a parda. Curtain. Window, window. O-W makes an O sound. O. Window. Window खिड़की है. Rug, R-U-G, rug. This is a rug. Now picture, picture. This is a picture. Chair, chair. This is a chair. A kursi is a chair. Notice CH. English में जब C and H एक साथ होते हैं, ch sound आता है. Ch, air, chair. Cushion, cushion. This is a cushion. Notice जब SH एक साथ होता है, sh sound आ जाता है. Cushion. So SH, sh. Cushion. Table, table. This is a table. Now book. This is a book. Book. This is a, that's right, book. Key. Key. This is a key. Now notice with key, K-E-Y, लेकिन key rhymes with C. Key, C. So, double E sound होता है. Key. Fan. That is a fan. ये पंखा है. Fan. हम सबको पता है phone. This is a phone. लेकिन ध्यान देना. Spelling देखो. Phone. P-H-O-N-E, not F-O-N-E, F like fan, but P-H. So कभी-कभी जब P-H एक साथ होते हैं इंग्लिश में sound आ जाते हैं. So phone. और सबसे last, bag. This is a bag. Okay. और नए शब्द हम सीख रहे हैं. Where, there, here. ये तीन शब्द एक सेट है. जैसे कहाँ, वहाँ, यहाँ होता है, वैसे where, there, here होता है. So, where is the wall? Where is the wall? ये एक सवाल है. Where का मतलब है कि कहाँ. Wall, दरवाजा, कहाँ है. Where is the wall?
इस सवाल कैसे जवाब देते हैं? So there is the wall. इसका मतलब है कि दरवाजा थोड़ा सा दूर है, मुझसे दूर है. So there is the wall. Over there. There is the wall. So there, जो चीज थोड़ा सा दूर है, हम there use करते हैं. So there is the wall. Or here is the wall. Here is the wall. क्योंकि here, क्योंकि पास है. Here is the wall. So हम practice करेंगे. Where is the key? मेरे पीछे बोलो. Where is the key? Good. There is the key. There it is, over there. There is the key. क्योंकि दूर है. फिर आगे की मेरे हाथ पे है. मैं कह सकते हैं, here is the key. I found it here. Here is the key. Okay. Where is the book? Where is the book? Oh, मेरे हाथ में है. Here is the book. Here is the book. There नहीं है, क्योंकि पास है. Here is the book. Okay. Where is the table? Where is the table? Is the table here or is it there? There is the table. क्योंकि थोड़ा सा दूर है. There is the table. But where is my bag? Where is my bag? Here is my bag. Here is my bag. Well done. दो और where का सवाल है. Where are you from? Where are you from? Where are you from? इसका मतलब है कि आप कहाँ से हैं? जब जवाब देते हैं, हम अपना गांव का नाम बोल सकते हैं, आपका देश का नाम बोल सकते हैं, आपका शहर का नाम बोल सकते हैं. तो where are you from? I am from Australia. I am from Australia. Where are you from? Bolo, where are you from? Okay, I am from, शायद आप यूपी से हैं, शायद आप देहरादून से हैं, और आपका गांव पौरी में है. कई जगह आप लगा सकते हैं. और I am from India, आपका देश का नाम. So ये सबसे first question. Where are you from? I am from Australia. Where do you live? ये सवाल थोड़ा सा अलग है ना. Where do you live? Where do you live? इसका मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं. So where are you from का मतलब आपका hometown कहाँ है. लेकिन मेरा hometown ऑस्ट्रेलिया में है.
पर आजकल मैं देहरादून में रहती हूँ. So, where do you live? I live in Dehradun. I live in. आपके शहर का नाम लगा सकते हैं और आपका एरिया का नाम, इलाका का नाम लगा सकते हैं. So, I live in Dehradun or I live in कोई भी नाम है. I live near IT Park. I live on Canal Road. I live in Dehradun. So, बहुत अलग अलग नाम लगा सकते हैं. But I live in Dehradun. ये सबसे easy है. आपके शहर का नाम है. So, मेरे पीछे बोलो. Where are you from? I am from Australia. वो आपका देश, आपके city. Good. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Good. Where do you live? I live in Dehradun. I live in Dehradun. आप बोलो. Good. ये वाला सवाल practice करना. और where is the सवाल वो भी practice करना. Where is the pen? Where is the phone? Where is the pot? आपके परिवार के साथ practice करो. इस तरीके से बहुत जल्दी सीख जाएगा. तो हम where का questions practice. Where, कहाँ, here, पास, there, थोड़ा सा दूर है. Okay, bye for now.